Good morning everyone. This is the second lecture of gaseous state, and in this lecture we will be learning about ideal gases, real gases, what is the difference between ideal gases and real gases, and deviation of real gases from ideal gas behavior. So in the previous lecture, after learning about various gas laws, that is Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law, Graham's law of diffusion, after learning about ideal gas equation and various postulates of kinetic theory of gases. So what are ideal gases? Ideal gases are gases which follow all the gas laws, ideal gas equation, and all the postulates of kinetic theory of gases at all the conditions of temperature and pressure. तो आइडियल गैसेस क्या होती है? वो गैसेस जो सारे के गैस लॉज फॉलो करती हैं, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं एंड ऑल द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को फॉलो करती हैं एट ऑल द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सभी कंडीशंस पे. But when the experiments were done, it was found that no gas is actually ideal in nature. It came out to be a hypothetical concept. तो जब experiments किए गए, it was found that all the gases follow various gas laws, ideal gas equation, and all the postulates of kinetic theory of gases at low pressure and high temperature. From here only the concept of real gases came. So how we can define real gases? Real gases are gases which follow gas laws, ideal gas equation, and all the postulates of kinetic theory of gases only at low pressure and high temperature. Gases follow तो करती हैं but conditions में only at low pressure and high temperature. So what are ideal gases? Gases which follow gas laws, ideal gas equation, and all the postulates of kinetic theory of gases at all the conditions of temperature and pressure. And what are real gases? Gases which follow gas laws, ideal gas equation, and all the postulates of kinetic theory of gases only at low pressure and high temperature. So what is the difference between ideal gas and real gas? Let us start from the first point. So first point, an ideal gas obeys gas laws and ideal gas equation at all the conditions of temperature and pressure, while non-ideal gas or real gas can be defined as gases which follow all the gas laws, ideal gas equation, and all the postulates of kinetic theory of gases only at low pressure and high temperature. Only at low pressure and high temperature. Let us move on to second point. Ideal gases obey ideal gas equation, that is PV is equal to nRT. But non-ideal or real gases, they follow van der Waals equation. This is the van der Waals equation which we will be deriving in the next lecture. That is P plus A n square upon V square multiplied by V minus NB is equal to nRT. Let us move on to third point. An ideal gas does not actually exist. It is an hypothetical concept. But non-ideal gases or real gases, all the gases, they nearly show non-ideal gas behavior or real gas behavior. Let us move on to fourth point. Ideal gases like hydrogen, nitrogen, oxygen, they can be easily liquefied. They cannot be easily liquefied. Ideal gases like hydrogen, nitrogen, oxygen cannot be easily liquefied. They show nearly ideal gas behavior. But in case of non-ideal or real gases like ammonia, that is NH3, sulfur dioxide, that is SO2, carbon dioxide, that is CO2, they can be easily liquefied. Let us move on to next point.
In case of ideal gases, intermolecular forces of attraction between the gas molecules are negligible. But in case of real gases, intermolecular forces of attraction are not negligible, especially at low temperature and high pressure. Let us move on to last point. The volume occupied by molecule of a gas in case of ideal gas is negligible as compared to the total volume of the gas. हमने last lecture में discuss किया था when we were discussing about postulates of kinetic theory of gases, that small v represents the volume of gas molecule and capital V represents the volume of gas. So in case of ideal gases, volume of gas molecule is negligible as compared to the total volume of the gas. But in case of real gases, volume of a gas molecule is not negligible as compared to the total volume of the gas. एक गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है दैट इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. सो हम ये एक अदर एग्जांपल डिस्कस करेंगे in which we can see how real gases they deviate from ideal gas behavior. As we can see, this is the graph between PV and P. This graph represents Boyle's law. Boyle's law क्या कहता है? That pressure is inversely proportional to volume. Pressure is inversely proportional to volume. So PV, अगर हम वॉल्यूम को इस साइड पे ले जाएंगे, PV will come out to be constant. PV is equal to constant. तो अगर हम PV का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, PV का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे विद प्रेशर, PV का प्रेशर चाहे इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, प्रेशर की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा एंड द प्रोडक्ट PV विल रिमेन कांस्टेंट. तो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो या प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो, प्रोडक्ट PV विल रिमेन कांस्टेंट. सो दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स this dotted line parallel to the p axis represents Boyle's law. चाहे ये क्या दिखा रही है? अगर आप प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो चाहे प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो, PV जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट रहेगा, which is represented by this dotted line parallel to this v axis. तो ये तो है इन केस ऑफ आइडियल गैस. हमारा अगर बॉयल्स लॉ का ग्राफ हम ड्रॉ करें तो ऐसा आएगा. बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल गैसेस और रियल गैसेस, there are two type of graphs which are obtained. In first case we can see that जैसे ही आप प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करोगे, PV की वैल्यू पहले तो डिक्रीज होगी, it will go on decreasing and gradually it will start increasing, as you can see in the graph of carbon monoxide and methane. इन दोनों के केसेस में क्या हो रहा है? जैसे ही आप प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, PV की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. द वैल्यू ऑफ PV गोज ऑन डिक्रीजिंग. सो दिस इज केस 1 जिसमें कि कुछ गैसेस में आप सल्फर डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लो, आप कार्बन मोनोऑक्साइड का ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड का ले लो, मीथेन का ले लो, अमोनिया का ले लो. इन सभी गैसेस के केस में दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज ऑब्टेन्ड इन विच एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रेशर, PV will first decrease and gradually it will start increasing. And in second case we can see as in case of hydrogen and helium. इनके ग्राफ में अगर हम देखें तो जैसे ही हम P की प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, PV की वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रही है as it was found earlier. PV की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो गई है as we can see in the graph of hydrogen and helium. So both of these graphs in case of carbon monoxide and methane जिसमें PV की वैल्यू डिक्रीज हो रही है and in case of hydrogen and helium जिसमें कि PV की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, both these graphs they represents the real gases.
क्योंकि आइडियल गैस बिहेवियर तो दिखा नहीं रहे हैं। अगर आइडियल गैस बिहेवियर दिखाते तो इनका ग्राफ कैसा आता, डॉटेड लाइन जैसा, जो कि आइडियल गैस बिहेवियर शो करता है। इनका ग्राफ ऐसा नहीं आ रहा बिकॉज दीज आर रियल गैसेस। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम थोड़ा सा रियल गैसेस की जो वैल्यू है स्टार्टिंग में आइडियल गैस बिहेवियर के बिल्कुल कंपैरिजन में आती है। So we can say that hydrogen and helium they show nearly ideal gas behavior, not completely. यहाँ पे भी हम completely नहीं कह सकते. They show nearly ideal gas behavior. But in case of another gases like carbon monoxide, methane, nitrogen dioxide, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, जितनी भी गैसेस आपके माइंड में आती है, आप हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के, दे इन दीज गैसेस एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रेशर, पीवी की वैल्यू फर्स्ट इट विल डिक्रीज एंड then it will start increasing gradually, धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होगी. So from here concept of compressibility factor, a term compressibility factor was introduced. So to show the deviation of real gases from ideal gas behavior, a term was introduced which was known as compressibility factor, that is Z. So how we write ideal gas equation? We write ideal gas equation as PV is equal to nRT. And for the real gases, the equation becomes PV is equal to ZnRT. This Z represents the compressibility factor. So value of Z comes out to be, आप nRT को उस साइड पे ले जाओगे तो Z is equal to PV divided by nRT. Here Z represents the compressibility factor. If the value of Z comes out to be 1, this represents the ideal gas. क्योंकि अगर Z की वैल्यू 1 आ जाएगी तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, PV is equal to nRT, which represents the ideal gas equation. If value of Z is less than 1, then we will say that gases show positive deviation from ideal gas behavior. And if value of Z is more than 1, then we will say that gases show negative deviation from ideal gas behavior. So this is the graph which represents the this is the graph between compressibility factor Z and value of pressure. तो देखो अगर आइडियल गैस इक्वेशन है तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड द इक्वेशन विल बिकम PV is equal to nRT. तो PV is equal to nRT के लिए हमारा बॉयल्स लॉ का ग्राफ कैसा आएगा, which is represented by this dotted line. अगर Z की वैल्यू इज लेस देन 1, जैसे कि आप देख सकते हो इन गैसेस में, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल मीथेन, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, इन सब के केस में क्या हो रहा है, जैसे ही आप प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, पीवी की वैल्यू फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. तो इन केस में क्या है, वैल्यू ऑफ Z कम्स आउट टू इज लेस देन 1. So we can say that these gases show negative deviation from ideal gas behavior. And in these two gases, that is hydrogen and helium, we can see PV की वैल्यू देखो सीधा ऊपर जा रही है, नीचे डॉटेड लाइन से, आइडियल गैस वाले ग्राफ से नीचे नहीं जा रही. तो यहाँ पे PV की वैल्यू स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रेशर. सो वी कैन से दैट दीज गैसेस show positive deviation from ideal gas behavior because in these gases value of Z is more than 1.